and welcome dear students on my YouTube channel. Today I am going to discuss question answers of chapter 14 of class 6, that is fabrics from fibers. So let us start with fill in the blanks. First is cotton plant grow well in black soil. Second is cotton is obtained from the fruit of the cotton plant called balls. Take care of the spelling, balls, B-O-L-L-S. The body coat of sheep is called the fleece. Now, number 4, wool is obtained from the body coat of animals like the sheep, goat or camel. Fifth one is jute is obtained from bark of the jute plant. Bark यानी उसका स्टेम का जो आउटर कवरिंग होता है उसको bark कहते हैं. Now match the following. फाइबर्स इंटू थ्रेड्स. फाइबर्स इंटू थ्रेड्स को कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं स्पिनिंग. थ्रेड इंटू फैब्रिक, वीविंग. कलरिंग द फैब्रिक इज कॉल्ड डाइंग. मेकिंग पैटर्न्स ऑन फैब्रिक इज कॉल्ड प्रिंटिंग. एंड मेकिंग फैब्रिक स्मूथ एंड शाइनी इज कॉल्ड फिनिशिंग. नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शंस. Which one of these is not a man-made fiber? Linen. Linen is a natural fiber. Second one is, from the following, the only incorrectly matched pair is cotton and seeds are the incorrectly matched pairs because cotton के fruit part को हम use करते हैं. Number 3. The process of pulling and twisting of strands to make a fiber is known as spinning. The answer is spinning. Number 4 is weaving is done by using machines called looms. Jute and cotton plant grow well respectively in jute in alluvial soil and cotton in black soil. So first option is correct. Now brief answer questions. How are clothes important for us? Clothes का, कपड़ों का हमारे लिए क्या महत्व है? The answer is clothes protect us from heat, cold, rain and germs. Clothes heat, cold, rain and germs से हमारी रक्षा करते हैं. Second is define the term natural fibers. Natural fibers को define करना है. The answer is fibers which are obtained from natural sources like plants and animals are called natural fibers. Third one is give 2 examples of plant fibers. The answer is 2 examples of plant fibers are cotton, jute. आप यहाँ linen भी लिख सकते हैं. Coir you can also write. Number 4 is name the kind of soil that is suitable for growing jute plants. Alluvial soil is suitable for growing jute plants. Fifth one is where is coir obtained from? The answer is coir is obtained from outer covering of coconut. कोकोनट के आउटर कवरिंग पर जो रेशे होते हैं, फाइबर होते हैं, उससे हम ऑब्टेन करते हैं कॉयर. नाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. स्टेट द कंडीशंस दैट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट. The answer is the conditions that help in growth of cotton plant are warm and humid climates having temperature over 16 degrees Celsius. Second is why do we need to use fresh soil for cultivating jute plant every year? State any 3 uses of jute. आप जानते हैं कि जूट प्लांट मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है जिसके कारण फ्रेश सॉइल की ज़रूरत होती है नेक्स्ट प्लांटेशन के समय. सो द आंसर इज जूट प्लांट्स यूजेस अप द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल टू अ लार्ज एक्सटेंट. फ्रेश सॉइल इज देयरफॉर नीडेड एवरी ईयर फॉर ग्रोइंग जूट प्लांट्स. जूट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स, गनी बैग्स एंड कारपेट्स. क्वेश्चन नंबर 3. गिव द डिफरेंस बिटवीन स्पिनिंग एंड वीविंग. स्पिनिंग एंड वीविंग में आपको अंतर बताना है. द आंसर इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग, वेयर एज
The process of making cloth from yarns is called weaving. वीविंग के प्रोसेस में कपड़े बनते हैं और स्पिनिंग के प्रोसेस में धागे. Number 4. Write in correct sequence the name of steps involved in the production of cloth. The answer is, the name of the sequence involved in the production of clothes are spinning, weaving, dyeing, printing, finishing and tailoring. Now question number 5. Differentiate between natural and synthetic fibers. State any 3 advantages of synthetic fiber over natural fibers. आपको नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स में अंतर बताना है और एडवांटेज यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स नेचुरल फाइबर्स के रिस्पेक्ट में कैसे बेहतर हैं उसके आपको 3 एडवांटेजेस बताने हैं. सो द आंसर इज, natural fibers are obtained from natural sources like plants and animals, whereas synthetic fibers are prepared in the factories using chemicals. Synthetic fibers factories में chemicals को use करके बनाए जाते हैं, जबकि natural fibers हमें natural sources यानी plants या animals से मिलते हैं. 3 advantages of synthetic fibers over natural fibers are: synthetic fibers are stronger, synthetic fibers are wrinkle free, synthetic fibers have fast color. Now value based question. Here is a short story. Vaibhav, the son of a weaver, was very much liked and appreciated by all his teachers. वैभव एक वीवर का बेटा है जिसे सभी टीचर्स पसंद करते हैं. He was a picture of attentiveness and concentration in his class. अपने क्लास में वो attentiveness and concentration की छाया है, उसका प्रतिरूप है. He behaved and worked in a way similar to that of his father. वो अपने पिता की तरह कार्य करता है. Now some questions are here. First one is, which according to you are the qualities, values that Vaibhav's father need while doing his work for weaving the cloth? The answer is attentiveness and concentration. Second is, give one example other than weaving of a process of making fabric from fibers. फाइबर से फैब्रिक बनाने का कोई दूसरा एग्जाम्पल आपको देना है वीविंग के अलावा. द आंसर इज knitting. The other method of making fabric from fiber is knitting. I hope you all understand.